Okay, good evening, all of you. We are live now. So this is lecture 2 of electrostatics, and today we are going to discuss about the method of charges. How, okay, everything looks fine. Okay, let us start. I'm so before starting, let us discuss the questions I have given to you in the last class. Okay, wait a minute. Okay, so here we can go now. Let me check once everything fine. Okay, everything is fine. We are live now. Everything looks good. Okay. Okay. I just check is everything is fine or not. Okay. So this is lecture 2 of electrostatic, and today we are going to discuss the uh, various method of charging. Okay, before that we are discuss the questions I have given to you in the last class. That is this one question. Okay, if you solve, that is very good. If you tried, and I will tell you this in this class. Okay, I will solve this question for you in this class. Okay, please focus here. So what is question telling us? One metallic sphere A is given a positive charge. Okay, so there is a one sphere A, and here is it is positively charged, and where is another identical sphere. Please don't miss this thing. Identical, it's mentioned identical. Okay, so here is another sphere B of same mass of both the sphere are same as it mentioned identical. Okay, V is given of equal amount of negative charge, means same amount of negative charge is given to B. And what you gonna ask? A mass of A and B remains same mass of A, and we are gonna about the masses of both the spheres. Okay, as I tell you before, if we want to give a charge to a body, what we can do? We can either transfer electrons, or we can give electrons to a body. Means if I want to charge this body positively, then I have to remove electrons. Uh, if I want to negatively charge this body, then we are gonna add electrons to this body. Okay. Similarly, in this case, if this body become positively charged, it means we have to remove some amount of electrons from this, and move the electrons into this body. Okay. F means Ne. Here Ne means number of electrons we gonna remove is must be equal to charge gained this by this body. So here we can conclude that total number of electrons that transfer from A to B must be equal to Q by E. Okay. But what they gonna ask? They gonna ask about the masses of A and B. As you know, B removes some amount of electrons from A. Okay, B removes some amount of electron from body A. So mass must remove, means at electron have some masses. So we gonna remove N into Me. Here N is number of electrons. So we gonna remove N times of mass of electron from A. So the mass of A become final mass of A. Final mass, that is final Ma, will become M initial. Sorry, M. Let me write it properly. Sorry, wait a minute.
अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ऐसे, अगर ए वाली इक्वेशन से नहीं समझ आ रहा तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि अगर किसी बॉडी में से अपन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो उसका ऑब्वियसली मास कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें से जा रहे हैं। अब मैंने एज मेंशन एयर देयर इज सम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो मास ऑफ ए फाइनल क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इनिशियल मास ऑफ ए दैट इज एम माइनस, अपन ने एन इलेक्ट्रॉन्स हटाए बॉडी ए बॉडी से, इनटू मास ऑफ एम ई, और इलेक्ट्रॉन का मास, और एम ऑफ बी क्या हो जाएगा फाइनल, अपन ने ए में से इलेक्ट्रॉन निकाल के बी में ट्रांसफर किए तो एम क्या हो जाएगा, बी का एम प्लस एन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। ओके ओके। सो यहाँ पर अब चार ऑप्शंस में से देखें तो मास ऑफ ए एंड बी रिमेन सेम, नो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए ए से बी तो दोनों का मास सेम नहीं रहने वाला है। ओके, मास चेंज होगा, ए का मास कम होगा, बी का मास इंक्रीज होगा। ओके, ए का डिक्रीज होगा, बी का इंक्रीज होगा, एज वी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए एंड मूव इट टू द बी। ओके, mass of A increases, no, mass of A decreases. Okay, so what is third, mass of B decreases, mass of B decreases, A भी wrong है, तो mass of B क्या होगा, increase होगा, mass of B increases, fourth one is correct. Okay, so आप समझे, आप अगर समझे तो आप कमेंट कीजिए यू गॉट इट, एंड आपने ट्राई किया तो बहुत अच्छी बात अगर आपको समझ में आया। ओके, तो यहाँ पर अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मास ऑफ बी। अगर आपको बोला जाए हाउ मच मास ऑफ इंक्रीजेस, अमाउंट ऑफ मास इंक्रीजेस, तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से मैंने आपको एन निकालना बताया, फ्रॉम एयर यू गेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, दैट इज एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई, यहाँ से आपका एन आ जाएगा, एंड फ्रॉम एयर यू गेट द मास ऑफ मास ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू हो जाएगा अपना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्यूब बाई ई। ओके, हो जाएगा अपना फाइनल मास जो अपने ट्रांसफर किया है फ्रॉम ए बॉडी ए टू बॉडी बी। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपके बोर्ड लेवल पर पूछ सकता है ये वाला, इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। ओके, अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट देख रहा हूँ अभी। ओके, wait a minute, let me open the comment section. ओके ओके, ये हो गया। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, इसी जो अपने पिछले क्लास में पढ़ा है उससे एक दो क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, आप ट्राई कीजिए, आपको यू गेट बेटर थिंकिंग प्रोसेस अबाउट द टॉपिक। ओके, सो हियर next question is when 10 raised to power 14 electrons are removed from a neutral sphere, then the charge on the sphere become, okay, so there is a sphere, this one is our sphere, sorry, let me take a standard sphere. I using this application first time, so there is some difficulty, I don't know the full feature of this, so it is my beginning. Okay, this is the our body, this is our body, and we remove 10 raised to power 14 electrons from this. Okay, so what is the charge of one electron, that is equivalent to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, then what is the charge of 10 to the power 14 electrons, that is 10 raised to power 14 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. From here we get the magnitude, means, okay, from here we get the magnitude. What is the magnitude? 1.6 into 10 raised to power, sorry, this one is 19. Okay, don't confuse, it's not 11, it is 19. Okay, from here we get 10 to the minus 14 into 10 to the minus 5 coulomb. Okay, so it's from here we get the how magnitude of the charge be transferred from the body. Okay, so what charge means, what is the charge, positive or negative, we get on the body. If we remove the electron from the body, what charge the body gain, that obviously is positive, as I mentioned in the last class. I tell you in the last class, if we remove the electron
from the body, it gain positive charge. Okay, so positive charge is gained by body. Okay, and how much? That is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 5 Coulomb. Okay, positive charge. This is charge gained by the body. Okay, it is also a simple question. Okay, now move to the next question. It is easier. I will give some question in the last. Okay, in the end of the lecture, you can try it or home, and we will discuss in the next class. Okay, okay. Some more question for your practice, because practice is most important in that to clear JEE advance. Okay, theoretical part is also important, but most important is practice. Okay, as more as you do practice, it is getting concept is more easier. Okay, so here is next question. 10 raised to power 12 alpha particle, that is nuclei of helium. Do you understand what is alpha particle? If you don't know what is alpha particle, what is alpha particle? It is it is nuclei of helium. That is helium. Okay, sorry, remove this helium. That is He plus 2. What is the configuration of helium? That is our helium. There is 2 electron and 2 proton, neutron, and 2 proton at the center. Okay, and 2 electrons are there. If we double ionize this helium atom, if we double ionize this helium atom, it become alpha particle. Okay, alpha particle is nothing, just the nuclei of helium atom. Okay, so let me erase this, or you can open it. Wait, don't erase. You remember this because most of time it is used in next chapters. So this is important. What is alpha particle? Okay, so alpha particle is the nuclei of helium. Okay, so what is the question? 10 raised to power 12 alpha particle fall per second on a neutral sphere. Calculate the time in which the sphere get charged by 2 microcoulomb. Okay, so what is the charge of helium atom? First, let us solve this. So, what is the charge of helium atom? Helium atom, oh, sorry, alpha particle. What is the charge of alpha particle? Charge of alpha particle? Alpha particle, that is equal to plus 2 electronic charge, means like protonic charge. If you, for I just take the magnitude, but for more 2 proton charge. Okay, that is equal to 2 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 Coulomb. That is of plus. Okay, plus 2 into 10, 1.6 into 10 minus 19 Coulomb. Okay, you understand? Because it is double ionized helium atom, so charge, as we remove 2 electron, then the charge on the atom will become plus 2 proton. Okay, means positive plus 2 protonic charge. Okay, okay, so now we have to reach the sphere up to 2 microcoulomb. Okay, so let us suppose there are n alpha particle, we need to reach the sphere 2 microcoulomb charge. Okay, so n into alpha particle, that is equal to what is will become, will become from 2 into 10 raised to power minus 3 Coulomb. Okay, using quantization of charges, means n alpha particle will form, sorry, uh, this part is not visible. Let me erase this. Okay, wait a minute, let me change the slide. Okay, so n alpha particle will form
Hmm. So n alpha particle will form 2 2 raised to power 10 raised to power 2 into 10 raised to power minus 3 coulomb. Okay. So from here we get 2 into n into what is charge of alpha particle, 2 into 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb, that is equal to 2 into 10 raised to power minus 3 coulomb. Okay, that is from here we get total number of charges we need to charge the sphere up to 2 microcoulomb. From here we get 2 raised to power minus 3 upon 2 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Okay, coulomb cancel out coulomb and this cancel out this. This will become 10 raised to power 16 upon 1.6. From here we get n is equal to to 10 raised to power 14. If there is calculation mistake, please check this. I think it is right. Okay, I don't sure, but I think it's correct. Okay, uh, alpha particle. Okay, this is number of alpha particle we get. Okay, so what we get, n is equal to, so here we get n is equal to 625 into 10 raised to power 20, sorry, 1 3 alpha particles. Okay, and what is the rate of falling alpha particles? As mentioned in the question, what is the rate? That is 10 raised to power 12. Okay, so 10 raised to power 12 alpha particle. Oh, wait a minute. I think I lost the slide. Wait a minute, please. This is the, so okay. I will arrange the slides after the class. Okay, first I will let me explain you. What we get, n is equal to 10 to 6 to 5 into 10 raised to power 13 alpha particles. Okay, and what is the rate of falling alpha particles? That is equal to 10 raised to power 12 alpha particles per second. Okay, so what is the time to fall this much of alpha particles? So let it be t second, then t into 10 raised to power 12 is equal to 625 into 10 raised to power 13. From here we get t is equal to 625 into 10 raised to power 13 upon 10 raised to power 12. Okay, if you don't understand, please message me. Okay, I will explain you again. This simple mathematics. Okay, from here t, we will get t is equal to 6250. I think if there are any calculation which please comment. I think I don't use calculator, or I think it is right. Okay, so I think this is correct. Okay, let me tell is everything is correct. Okay, so this one is fine. We get that t is equal to 6250 seconds. Okay, so this is the three questions which are based on the previously we studied all the concepts. Okay, quantization of charges and all those things. Okay, you understand? If any doubt, you can comment. I will tell you. Okay, so move to the next topic, that is friction methods of charging. Okay, as I mentioned you, method of charging means how we can transfer charge from one body to another body. Okay, so there are three methods generally we learn in
NCERT has also mentioned in NCERT there are friction. Due to friction, we can transfer charge from one body to another body, and it is experimental data. Most of the data in this is experimental, and second one is induction. And when a body, charged body, move closer to the uncharged body. Let me explain you in the next slide. Okay, I will tell you this one, and also and third one is why contact or conduction. Okay, there are three methods that we gonna learn. Okay, so let's move to the first one, that is friction. Okay, so suppose there are two bodies. There are two bodies. Okay, one is this and other one is this. They are in context. Wait a minute. Erase. I let me erase this one. Okay. Let me draw a perfect. Okay. Okay. Suppose this one a body. Okay. And this is another body. Okay. Insert this one. Okay. This one is another body. Okay. Okay. So this body moves in this direction and this body moves in this direction. So both are rubbing over each other. Okay, like this. Okay. So from here, the friction is taking place. So from here, electron transfer takes from one body to another body. Now don't ask me ki from which body to which body, because it is not clear. It is experimental data for particular bodies. If we mention like wood, cotton, means these are the experimental data which is recorded, and then we can conclude that which body will get positively charged and which body get negatively charged. From here, generally there is no study that tells which body will get positively charged or which body get negatively charged. So there are experimental data for uh, particular body. If we choose two pairs of body, means one is wood, one is cotton, then we have to see the data which body will get positively charged and which one get negatively charged. Okay, if you don't know, you can't assume. I means if there is no study means I in our syllabus there is nothing to such that we tell you without knowing. Okay, so as we rub the sorry, oh sorry on the okay, okay, if we rub the body A against body B, then some amount of electron transfer from body A, either from A to B or it may be from B to A, I don't know. Okay, because I don't mention the which type of bodies these are, is cotton or wood. Okay, let us assume generally, let us assume transfer of electron take place take place from A to B. Okay, so एज्यूम किया है, ये मत सोचना कि ये कोई रेफरेंस लिया मुझे पता हो पहले से, ऐसा कुछ नहीं है. एज्यूम किया है मैंने फॉर दिस कंडीशन. ओके, so electron transfer take from this to this, so this body become positively charged and this body will negatively charged, and this is due to the friction. As the we rub the two bodies, so due to friction there are some heat energy generated, and also and due to that heat some amount of means atom on the surfaces of these two body will get excited and they move from one body to another body. Okay, this is also, and we can't decide which body will transfer and which body will gain the electron, which body will lose the electron, just we. Okay, so this is the one that we transfer the electron due to friction, and this is random. We can't decide which one body gain the electron. Okay, same thing. Of for example, if you observe in your daily life something in your daily life, you also observe these phenomena, like when we comb our hair, the comb hair will attack toward the comb, like as in like this here. When we comb this with our comb, then okay, so uh, one of the one of them will lose the charges and one become
one will gain the charges. Like suppose this is our hair. I will just magnified the I just magnified this here. Magnified, okay. Don't think that's where here इतना बड़ा कब से होने लगा, ओके, जस्ट मैग्नीफाइड इट, ओके। तो सपोज करो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब इनिशियली इट इज अ न्यूट्रल, ओके, ओके, इनिशियली इट इज अ न्यूट्रल एंड देयर इज अ कॉम, ओके, like this. Sorry, I can't draw it properly. So like this one is our comb, like this, okay. So this is our comb. Initially it is also a neutral, or it is also neutral, okay. So when we comb our hair, due to friction, some amount of electron move from here to here. I don't know from here to here or here to here. It is experimental data again. Okay. Don't need to remember. Means this data you don't need to remember. If you, they ask in the question, they will tell you where from where charges transfer, where charges transfer is taken place. Means okay. It is also mentioned in question. For if you means if you appearing for class 12 board, then I think you should literally means ऊपर ऊपर से आपको आना चाहिए कि कितना थोड़ा बेसिक बेसिक, ओके, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि आपको याद करना पड़े कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है। वैसे मैंने लिख के लाया हूँ, इसको बाद में देखेंगे। ये कुछ लिस्ट है जहाँ से ट्रांसफर होते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी ये याद करने की बिल्कुल जरूरत है। नीड नॉट टू रिमेम्बर, नीड नॉट टू रिमेम्बर, ओके। इनको इसको याद नहीं करना है, ओके। सो फ्रॉम हेयर, ओके, फर्स्ट एग्जांपल अपना ये हो गया कॉम्ब एंड हेयर वाला, ये आपने देखा होगा। और पेन एंड हेयर वाला होगा जब आप ऐसे पेन को रब करते हैं, रब करते हैं, रब करते हैं, बहुत सारा करते हैं एकदम, हेयर से रब रब करने के बाद जैसे ही आप स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके आते हैं तो वो एकदम अट्रैक्ट होने लगता है आपकी पेन से। सो इट इज ऑल्सो अ चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। इसमें दो कॉन्सेप्ट लगते हैं, चार्ज भी, चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन फ्रिक्शन as well as induction, okay. I will tell you this one, okay. So जब आप किसी पेन को ऐसे हेयर से रब करते हैं तो वो फर्स्ट इट विल गेट positively or either negatively. Positively, so let us suppose the pen will get positively charged, and when you attract the piece of paper, means like this, when you move the, sorry, when you move the charged pen towards the small pieces of paper, they will attract towards the pen, okay. It is due to from this phenomena is here, this phenomena is happened, it is induction. I will tell you this after the friction, okay. First, but the phenomena when we rub the pen towards our hair, it is friction, okay. There are two phenomena taking place in this case, okay. And cotton cloth and hair, I think you see my reels on the Instagram when you sit on a plastic chair, insulated chair, and uh, rub a cotton cloth speedily on your hairs, and when you touch your finger to the stove, gas stove, it will get a start, means it will catch fire, because when you touch that it will create a spark, means when you आप किसी चेयर पे बैठे हैं और एकदम से आपने हेयर से आपने जोर से आपने ऐसे चेयर पे बैठे हैं, इंसुलेटेड चेयर पे, और आपने हेयर पे से एकदम कॉटन क्लॉथ निकाला, तो वो क्या हो जाता है, आप क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि कॉटन क्लॉथ और हेयर के भी इसमें फ्रिक्शन हुआ, उसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर हुआ। उस चार्ज ट्रांसफर की वजह से आप क्या पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज हो गए। और जब आप स्टॉक को टच करते हैं ना, तो आप क्या है, आपसे होते हुए पूरा चार्ज ग्राउंड होने की कोशिश करता, ग्राउंड में जाने की कोशिश करता, उस वजह से स्पार्क होता है और उससे आग जल जाता है। आपने फिनोमेना शायद देखा हो, मोस्टली लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा वो, okay. So it is, these are three phenomena that you can observe in your daily life, which is example of charge by friction, okay. And these are some
Okay, let me increase the size. Okay, then this band. Okay, so these are some example of charge, how which which material get positively charged and which one will get negatively charged. Okay, the material above in list when rubbed against against material lower in the list, material which is which is above in list get positively charged. Okay, means if we rub, suppose let us take fur and resin. Okay, fur and resin, if we rub these two, then the above means the material which is above in the list means that is fur get positively charged and resin will get negatively charged. And I mentioned you again, this is experimental data. We can't, if you don't know, we can't tell which one will get positively charged and which one will get negatively charged. Okay, so this all these 9 11, oh sorry, 11 material are from experimental data. Okay, fur, glass, cotton, and these are the list first second, these are the order wise labeling of all the materials. Okay, if you rub glass against metal, if, or cotton against wood, this one is wood, cotton against wood. Okay, then cotton will give positively charged and wood will get negatively charged. Okay, so these are and इनको आपको याद नहीं करना है, need not to be remember. Okay, okay, तो इनको याद नहीं करना है. Okay, okay, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर. that is our that is our sorry. um, oh, okay, okay, this one is question. Okay, let us see the question. Is on friction charge due to friction. Okay, what is the question? When a piece of polythene is rubbed with wool, okay, a charge of negative is developed. Means wool. What is that? Okay, there is our what is rubber? Okay, rubber, and here is our wool. Okay, I think it's should be wool. Wood. Okay, okay. When a piece of polythene is rubbed, is it sorry, polythene? I polythene. Polythene. Okay. When a piece of polythene is rubbed with wool, a charge of negative is developed on polythene. Okay. Means if we rub these two, then the what we get means polythene will get negatively charged. Means what is the charge? -7 Coulomb. Okay. What is this? What do you understand by this? Means when we rub these two, charge transfer take place from here to here. Means from wool to polythene. Okay. Understand? And how much charge is transferred? 2 into 10 raised to power -7 Coulomb and negative charge. Okay. Is developed on polymer. What is amount of mass which is transferred to the polythene? Okay. Do you remember that question? I will tell you. Okay. Sorry. कौन सा question था? Wait a minute. हाँ. This one. This is similar to this one. Okay. I will tell you now. They may ask this. Okay. So these things will be used here. Okay. Here. So I think you should try if anyone is. I think you should.
try and let me what is the okay, what is the answer. I will explain you how to hit this question and how we approach this. Suppose this much amount of charge is transferred from bull to polythene. Okay, so it is n multiple of E. Okay, it is sure, as we know quantization of charges. Okay, so that must equal to 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb. Okay, so here n into what is the charge on electron, that is minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Okay, and this is also on negative. Okay, so minus 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb. Okay, here we cancel negative to negative, coulomb to coulomb. Okay, from here we get n is equal to 2 into 10 raised to power minus 7 upon 1.6 into 10 raised to power minus 19. Okay, so from here we get 2 upon 1.6 into 10 raised to power 12 electrons. Okay, electrons. Okay, so what we get, 2 upon 1.6 into 10 raised to power 12 electrons. Okay, this much amount of this many electrons is transferred from bull to polythene. Okay, do you understand? Okay, do you understand what we get? We just equate total amount of charge with n into number charge of electrons as so this much amount of charge is multiple of n, integral multiple of n, then that is n into charge of electron must equal to 2 into 10 raised to power minus 7. From here we get the number of electrons transferred from bull to polythene, that is equal to that we get 220 upon 16 into 10 to power 12. 12 right now, 12. Okay, how? Okay, 12 electrons. Okay, okay. So n will become 20 upon 16 into 10 raised to power 12. I think is it 12? Okay, check. 12. Okay, okay. 12 electrons. Okay, from here we get n is equal to 1 point, it is 5, this is 425 into 10 raised to power 12 electrons. Okay, from here we get 20 upon 16, that is 1.25 into 10 to the power 12 electron. Okay, I think it's like 5 4. Okay, so electrons. Okay, so what is mass of this electron? As I told you in the last class, mass of one electron, that is equal to 9.1 into 10 raised to power minus 13 1 kg. Okay, and what is the mass of n electrons, that is equal to 9.1 in 10 to the power minus 31 into, once cross verify this, I think it is correct, but I have a doubt. Okay, once check this one once by yourself. Okay, I will tell you in the next class. I think it is correct. Okay, so from here we get 9.1 into 1.25 into 10 raised to power, subtract this, here we get minus 19 kg. Okay, so please calculate this one. I have to, I don't use calculator, and I have also don't have calculator right now, so please calculate this by yourself. Okay, I will leave this on you. Do this calculation by yourself. Okay, okay, you understand? This is the this is this much mass of this much mass transfer per from bull to polythene. Okay, polythene. Okay, you understand? Basically, try to understand the how I approach the question. Okay, don't just see the calculation or just watching like movies. Okay,
focus on the approach, how I approach the question and how I see the things. Means I have to given so many things and which way, which one is I use and in which way I use. Okay, to minimize the time of solving the questions. Okay, this is most important. Time to manage the time in question. Okay, because it is very less time to attempt the question. Okay, in JEE means it is very shortage of time, so you have to increase your speed. So means कोशिश किया करो कि वन गो में क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस करके पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया करो। मीन्स बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार पढ़ना स्टार्ट किया, बार बार ये नहीं कि एक लाइन पढ़ा फिर से वही लाइन पढ़ा, ऐसे कुछ होते हैं स्टार्टिंग में लड़के। इस हैबिट को क्लास 11 से, जब से आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उसी दिन से डालना स्टार्ट कीजिए कि क्वेश्चन को हमेशा वन गो में पढ़ा करें। एक बार स्टार्ट किया, पहली लाइन पढ़ी, जितना भी मेन इंपॉर्टेंट डाटा है, जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में, उसको नोट किया, दूसरी लाइन पढ़ा, उसको नोट किया, और साथ ही साथ एज्यूम करते चला करो। अगर 3D का क्वेश्चन है या फिर वेक्टर मोशन का क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, तो उसमें एनालिसिस किया करो कैसे कैसे फोर्स लग रहा होगा। तो ये सब अच्छा अच्छा होता है, आपका टाइम बचाता है, बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ये बेसिक ट्रिक है आपका टाइम बचाने की, क्योंकि मेंस में टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है मेंस में। ओके, एडवांस में तो आपके पास सफिशियंट टाइम होता है, जितना आपको आता है उतना करने की। ओके, मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ओके, यहाँ पर आप समझ गए मैंने क्या किया। फर्स्ट आई फाइंड द नंबर ऑफ चार्जेस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम बुल टू पॉलीथीन, एंड देन आई कैलकुलेट द मास ऑफ that much of that many of electrons. Okay, so now move to the next slide, that is induction. Okay, so I will tell you the friction. What I tell you, all the things I will repeat it again. Here I will give 3 example, comment here if these are real life practicals that you experience once in your life। मीन्स हर कोई एक्सपीरियंस करता है इसको, तो आपने देखा ही होगा। ओके, और उसके बाद ये इनको याद नहीं करना, बिल्कुल याद नहीं करना है। सीबीएसई के शायद आप पीवाईक्यू देखना एक बार, वैसे उसमें भी नहीं पूछा गया होगा, ये सब तो नहीं पूछेंगे। ओके, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में नहीं आता है, याद करने वाला है, और वैसे भी ये इतना काम नहीं है। अगर पूछेंगे तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे विच वन विल गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड विच वन विल गेट नेगेटिवली चार्ज। ओके, इसको याद बिल्कुल भी करने की जरूरत, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। ओके, मैंने तो कम लिया है इसमें, इससे भी बड़ी लिस्ट है, कहाँ तक याद करोगे आप। ओके, सो स्टॉप जस्ट लर्निंग द थिंग्स, वो जस्ट याद करना बंद करो, समझना शुरू करो, समझो चीज़ों को। ओके, सो अब आते हैं इंडक्शन पर। ओके, नाउ व्हाट इज इंडक्शन। ओके, so before starting induction, let me first explain one thing. What is earthing? Okay, concept of charging. Okay, what is earthing? Here I will go. So this will a little weird diagram. Okay, but let me explain. We lost so much time in drawing these things. We will not enough time to study the things. Okay, so we go with these things. Okay, so we have two spheres. Okay, one is negatively charged, one is positively charged. Okay, so I will tell you what is earthing. This symbol, do you see this symbol? Let me wait. Let me draw it again. Okay, this symbol. Okay, red. Okay, marker red. Okay, this symbol. Okay, this symbol that I draw right now. This one. This is symbol of earthing. If you see this symbol, it means the buyer is earthened. Okay, ये अर्थ कर दिया है इस वायर को। ओके, अर्थ करने का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाई अर्थ। ओके, तो अर्थ करने का मतलब है इफ यू स्विच ऑन दिस, सो चार्ज विल ट्रांसफर ट्रांसफर। अब कहाँ से कहाँ जाएंगे ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मेन जो अपना फोकस होता है वो रहता है, अर्थिंग का रियल मीनिंग होता है वोल्टेज ऑफ दैट अर्थ अर्थ पॉइंट will become
zero, zero. Okay. So wait a minute. I think you can't see this. No, no, no. So wait a minute. Wait a minute. Okay. Let me erase this from there. Here. Let me try to write a small. Okay. Okay. So when we are the object or the point, okay, the voltage of that point become zero, zero. Okay. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. ओके. जब अपन किसी पॉइंट को अर्थ करते हैं या फिर किसी वायर के थ्रू किसी होल बॉडी को अर्थ करते हैं तो उस होल बॉडी का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो हो जाता है. ओके. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स यू लर्न. आई विल टेल यू व्हाट इज वोल्टेज एंड ईटीसी. आई ये वाले सब पॉइंट्स अभी इसको इतना फोकस मत कीजिए, लेकिन मेन मेन जो डिफिनीशन है अर्थिंग की वो यही है. ओके. सो इसको आप अपन नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझेंगे, सॉरी अगले चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे. इसमें पोटेंशियल वोल्टेज वगैरह आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है. ओके. उसमें और अच्छे से समझेंगे. अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझिए बस. इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिए. सो जब अपन स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा. ये नेगेटिव चार्ज है. मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, अगर कोई बॉडी है तो उससे जितना भी ट्रांसफर होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है. इफ पॉजिटिवली चार्ज करना है इसको तो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, अगर नेगेटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे. ओके. तो जब अपन इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो के इधर अर्थ में चला जाएगा. ओके. अर्थ में चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगी बॉडी. ओके. बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी जब यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होके यहाँ पर जाएगा. और हाँ, ये ब्लू वाला जो स्टैंड है ये इंसुलेटेड है. इट इज अ इंसुलेटेड स्टैंड. इंसुलेटेड स्टैंड. ओके. इंसुलेटेड स्टैंड पे ये खड़ा हुआ है. ओके. सो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे तो अर्थ हो गया ये, तो पूरा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चला है जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, उसके बाद न्यूट्रल हो जाएगी. ओके. और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है तो एज वी नो द करंट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके. ये आपने 10th में अच्छे से वाली डेफिनेशन याद करके रखी है, मुझे वापस बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. ओके. जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ है तो करंट कहाँ से कहाँ गया होगा, यहाँ से यहाँ की तरफ. इट इज अ फ्लो ऑफ करंट. ओके. सो सो if body is, wait a minute, let me move to the next slide. I will rearrange these slides. Okay. If a body is negatively charged, current move from ground to body. Okay. बताया ना मैंने, जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक्सेस हैं और यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं ग्राउंड में जा रहे हैं तो इसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ग्राउंड टू बॉडी. ओके. तो ये हो गया. और अब देखेंगे पॉजिटिव चार्ज वाले केस में. पॉजिटिव चार्ज वाले केस में क्या होगा, अब इस केस में तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलेगी. अब ये मत बोल देना कि इस केस में प्रोटॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, बिल्कुल गलत है. ऐसा कुछ नहीं होता है. प्रोटॉन मूव नहीं करता है कभी भी. जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव पार्ट होता है, जैसे अपन किसी एटम से न्यूट्रॉन हटाते हैं, इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, जब when we remove electron from a body then it will become positively charged. Then only this part will movable. This is not moving. It is still in the lattice. Okay. lattice में फिक्स होता है ऐसे, ये मूव नहीं करता है. ओनली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन वही मूव करते हैं. ये
बाकी बचा हुआ इसको जो बोलते हैं ना ऐसे, वेट अ मिनट, हाँ, जो ये अपना, जो अपना ऐसे बहुत सारा, अगर अपन इसको बैलेंस शेल है अपनी, बैलेंस शेल है किसी एटम की, ओके, बैलेंस शेल, बैलेंस शेल, ओके, ये वैलेंस शेल, अगर अपन इसको हटा दें इस सेल को पूरे को, तो ये जो अंदर का पार्ट जो बचता है, ये न्यूक्लियस विथ ऑल अदर, इसको बोलते हैं कर्नल, ओके, स्पेलिंग आई थिंक गलत हो सकती है लेकिन कर्नल बोलते हैं इसको, ओके। तो ये वाला पार्ट होता है, ये लेटिस में फिक्स होता है। अगर ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो अपने हैं वो अगर मूवेबल हैं, ये जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये मूवेबल हैं, ये आराम से जा सकते हैं, फ्री टू मूव होते हैं कंडक्टर्स में। जब ये लेटिस में ऐसे फिक्स रहता है ये एटम, आप पढ़ोगे आगे जाके लेटिस वगैरह में बार बार, ये जो वर्ड लेटिस यूज कर रहा हूँ इसका बहुत अच्छा खासा सिग्निफिकेंस है, आप सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, ओके। अगर पढ़ लिया होगा तो और अच्छे से समझ आएगा। जब ये ऐसे, ये लेटेस्ट में एकदम फिक्स रहते हैं, इधर उधर मूव नहीं करते, मूव करते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओनली दीज आर फ्री टू मूव, ओके। पूरे एटम को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह से, ओके। इस बात को हमेशा याद रखिए, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही होता है, हीट कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो भी होता है वो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही होता है, क्योंकि लेटेस्ट में वही घूम सकते हैं, इतना बड़ा एटम नहीं घूमेगा, ओके। ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर movable and they are cause of इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो इसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूमते हैं। अब आप ऐसे नहीं बोलेंगे पूरा एक ही पूरा ये इलेक्ट्रॉन चला गया, चलो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उधर चला गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी इधर आ गया, अब इस पूरे पॉजिटिव चार्ज को इधर मूव करा देते हैं और करंट बढ़ जाएगा अपना, ऐसा कुछ नहीं होता, ओके। वही मैं बताना चाहता हूँ आपको, अच्छे से समझ लीजिए, ओके। तो इस केस में क्या होगा, अब देखो पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं कर सकते, तो अब मूव क्या करेगा, अब इसमें मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप तो बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, चार्ज तो नेगेटिव है अपने पास, तो अब क्या करें, इलेक्ट्रॉन आएगा अब यहाँ से अर्थ से, अब यहाँ से आएगा अर्थ से, अब इलेक्ट्रॉन अर्थ से जाके इस बॉडी में जाएगा, तो जितने भी प्रोटॉन जो एटम्स पॉजिटिव चार्ज गेन किए हुए हैं उन सबको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को भी नेगेटिव मिल जाएगा, इन सबको नेगेटिव मिल जाएगा, ओके। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ओके। सो इस केस में क्या हुआ, फ्रॉम अर्थ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम अर्थ टू बॉडी, ओके। अगर अर्थ से बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन गए तो करंट कहाँ से कहाँ तक कहाँ जाएगा, एज करंट इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो करंट जाएगा इधर से इधर की तरफ, ओके। इट इज द फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ओके। ये समझ आया ना, ये दोनों अच्छे से समझ आए। इसके बाद अपन इंडक्शन पे को अच्छे से समझ पाएंगे, ओके। तो यहाँ से अपन ने क्या समझा, वेट मिनट, इफ अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज then current flow from body to earth, ओके। ये फर्स्ट वाला केस हो गया अपना, ये सेकंड वाला, ओके। ये अच्छे से आप समझ लीजिए, हो गया। अब आते हैं अपन इंडक्शन पे, अब आपको इंडक्शन अच्छे से समझ में आएगा, ओके। ये आ गया इंडक्शन, ओके। अब सपोज करो ये यार कुछ गंदाई बना हुआ है, let me draw it again, okay। I think I should extend the class, जितना सोचा था उतना कवर नहीं हो पाया, क्लास को थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे, ओके। दिस, ओके, दिस वन, ओके, एंड आई नीड दिस वन ऑफ रेड कलर,
insert this one. Okay. Let me start now. There is a positively charged body. Okay, this is positively charged. Okay, and we bring it to the towards the sphere. And one thing that I have to mention is this stand is insulated. Insulated stand means no charge flow through this way. Okay, इसके थ्रू कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा. ओके, जितना भी चार्ज आ रहा है वो इस स्फीयर पे आ रहा है, नीचे की साइड कुछ नहीं जा रहा. ओके, इसको याद रखना. ओके, सो एज वी कम क्लोजर टू द स्फीयर, जैसे जैसे स्टिक को स्फीयर के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, जो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको बोलेंगे मेटेलिक स्फीयर. ये मेटेलिक स्फीयर, स्फीयर, स्फीयर. ओके, अब जैसे जैसे इस पॉजिटिव चार्ज स्टिक को अपन इसके पास लेके आएंगे तो उसमें जो फ्री मूवेबल इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, इधर की तरफ आएंगे. और पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, इधर की तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे. ओके, अब ये मत बोलना कि सर एटम थे वो इधर की साइड चले गए और इलेक्ट्रॉन इधर की साइड आ गए, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, जस्ट हुआ क्या है, जो इस तरफ के जो एटम्स थे, मतलब इस साइड वाले जो एटम्स हैं, लेट मी हाईलाइट दिस. हाँ, तो इस साइड के जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर आ गए. ओके, इधर से भी आए, इधर से भी, सब तरफ से आए हैं. बाकी देखो इधर के इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो तो मूव करेंगे नहीं, तो मूवमेंट कहाँ से होगा, मोस्टली इधर वाले साइड से. ऐसे इधर पे जो जो एटम्स होंगे ऐसे, उनके इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल के तो उधर जाएंगे, इधर वाले के इधर तोड़ी जाएंगे, ये तो इधर है ही ऑलरेडी. ओके, मूवमेंट का होगा इधर से, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा, इधर. और ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, इधर. ओके, अंडरस्टैंड, ये समझ आया. ओके, सो जैसे जैसे अपन इसको पास लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. ओके, अब क्या ये न्यूट्रल, ये अपना चार्ज हो गया. अब बताओ सोच के, ये चार्ज हो गया, नहीं हुआ, बिल्कुल चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि एक प्रोटॉन के लिए अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है. बॉडी में, बॉडी अगर अपन पूरे सिस्टम को देखें अभी भी न्यूट्रल है. सिर्फ प्रोटॉन इधर हो गए, इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, सॉरी प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर हो गए हैं. ओके, ए अभी न्यूट्रल नहीं, ओ सॉरी, चार्ज नहीं हुआ है, ए अभी भी न्यूट्रल बॉडी है. अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो ए अभी भी न्यूट्रल बॉडी. अब ये चार्ज कब होगा, चार्ज कब होगा, अब अपन क्या करें, इस इलेक्ट्रॉन को लेके अर्थ कर दें तो क्या होगा, ये जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो क्या होगा, वो इसके थ्रू अंदर चले जाएंगे अर्थ में. ओके, तो इस पे क्या, कौन सा चार्ज बचेगा, फाइनली इस पे क्या बचेगा, ऐसे ओनली पॉजिटिव चार्ज बचेंगे. ओके, ऐसे इधर की साइड. अब नाउ रिमूव दिस पॉजिटिव चार्ज. ओके, और हाँ, एक चीज और, इस केस में अपन ने पॉजिटिव इसको स्टिक को टच नहीं करवाया, अपन ने बॉडी से टच नहीं किया, विदाउट टचिंग है. देखो मैंने मेंशन भी किया था जब क्लास स्टार्ट हुई थी, मेथड ऑफ, इसमें देखो इंडक्शन, व्हेन अ चार्ज बॉडी मूव क्लोजर टू अ अनचार्ज बॉडी, नो कांटेक्ट. आई विल मेंशन हियर नो कांटेक्ट. इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं होता है, बॉडी को क्लोज लाते हैं, बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, उसके बाद नेगेटिव वाले को अर्थ कर देते हैं और बॉडी क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. ओके, और दूसरा एक और मेथड मैं आपको बताऊं, तो वो शायद आई मैंने स्लाइड बनाई है इसकी. ओके, हाँ, इस वाले एग्जांपल को देखो, अपने पास दो स्फेयर हैं. ओके, न्यूट्रल स्फेयर है इनिशियली, both are neutral and both are in contact initially. Okay, neutral spheres, neutral metallic spheres. Okay, metallic है ये दोनों. Okay, metallic, both are neutral metallic spheres. Now we come we come a we come closer to a with a stick. Okay, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज रॉड को अपन इसके पास लेके आएंगे
तो क्या होगा, अब देखो पिछले वाले केस में क्या था, इधर निगेटिव आया था, इधर पॉजिटिव आया, पिछले वाले केस की बता रहा हूँ। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये आप सोच के बताइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, इस केस में पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं आएगा। ओके, अब देखो ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में हैं, तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन खिंच के इधर आएंगे, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खिंच के इधर आएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर की साइड आएंगे, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर की साइड नहीं आएगा, वो इधर की साइड आएगा, क्योंकि अब दोनों बॉडी क्या है, कांटेक्ट में है। कांटेक्ट में नहीं होती तो पिछले वाला केस होता, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, इस बात का अच्छे से याद रखना। अब सपोज करो पूरा नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। ओके, ये थोड़ा कॉमन सेंस है, इसको समझना चाहिए कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज उधर आएगा, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि दोनों बॉडी कॉन्टैक्ट में है। ओके, सो अगर अपन अब देखो ये हो गया, चार्ज सेपरेट हो गए दोनों साइड, पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया। अब दोनों बॉडी को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, दिस बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस बॉडी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। ओके, तो यहाँ पर दो फिनोमेना हुए, क्या क्या हुए, ये अभी एक अपन ने पढ़ा नहीं है। ओके, अभी चार्ज बाई कांटेक्ट मैंने पढ़ाया नहीं, कंडक्शन नहीं पढ़ाया, तो यहाँ पर एक तो हुआ चार्ज बाई इंडक्शन, चार्ज बाई इंडक्शन। ओके, फर्स्ट फिनोमेना, और सेकंड फिनोमेना जैसे ही अपन ने इसको यहाँ पर कांटेक्ट में था, ये दूसरा हुआ चार्ज बाई कांटेक्ट। ओके, तो अपने दो फिनोमेना देखे इधर। ओके, ये हो गए दोनों फिनोमेना, अच्छे से समझ आए। ओके, अब आता है कांटेक्ट चार्जिंग, ये लास्ट टॉपिक है, फिर क्लास खत्म करो। ओके, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। ओके, ये सिंपल है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सपोज करो अपन पे इनिशियली दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ऑफ Q1 and it is Q2, it is also a positively charged body. Okay, as we on the switch, redistribution of charge, redistribution of charge begins, दोनों का पे जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा इन सच वे, वेट अ मिनट, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा, टिल बोथ रीचेस एट सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप आगे पढ़ेंगे, एट सेम पोटेंशियल। ओके, मीन्स एक Q1 चार्ज लिया, एक Q2 चार्ज लिया, दो स्पेयर्स लिए, उन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट किया, तो वो उसमें चार्ज ट्रांसफर जब तक होगा जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे ना पहुंच जाए। व्हेन पोटेंशियल ऑफ, सपोज करो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, व्हेन पोटेंशियल ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बॉडी बी। ओके, लेकिन अभी सिंपल केसेस के लिए अपन इन दोनों स्पेयर्स को आइडेंटिकल मानेंगे, आइडेंटिकल। ओके, इन दोनों स्पेयर्स को आइडेंटिकल मानेंगे। ओके, तो इस केस में क्या होगा, दोनों की पोटेंशियल सेम सेम रहेंगी, तो नॉर्मली अपन डायरेक्ट मैथमेटिक्स के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जैसे ही अपन ने इसको टच किया स्फेयर्स को, उस केस में क्या हुआ, ए स्फेयर ए बी है, जब जैसे ही ये दोनों कनेक्ट हुए कंडक्टिंग वायर के थ्रू, इस पे Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो इन दो फाइनल चार्ज क्या होगा इस पे, जब फाइनल कंडीशन देखेंगे ए बी,
तो इस पे जो क्यू फाइनल होगा दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2/2 एंड Q2 मीन्स इस पे Q फाइनल ऑन बी, ए पे हो गया, Q फाइनल ऑन बी इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2/2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी अच्छे से अप्लाई हो रहा है। क्यू इनिशियल क्या था अपना टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, और फाइनल क्या है Q फाइनल दोनों पे Q1 प्लस Q2/2 प्लस Q1 प्लस Q2/2। तो यहाँ से देख सकते हैं क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल है अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी अपना हो रहा है। ओके, तो हो गया चार्ज बाई इंडक्शन में। इसमें क्या हुआ, सॉरी चार्ज बाई कंडक्शन। तो इसमें क्या हुआ, टू बॉडीज चार्ज्ड बाई कनेक्टिंग देम विद अ कंडक्टिंग वायर। ओके, अगर इसमें किसी एक बॉडी को न्यूट्रल ले लें, दूसरी को चार्ज ले लें, चार्ज बॉडी ले लें, तो भी चार्ज ट्रांसफर होगा। तो उस केस में दूसरी बॉडी भी अपनी चार्ज हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया चार्ज बाई कांटेक्ट और कंडक्शन। ओके, और कुछ बस इतना ही है आज के लिए। और लेट मी सी इफ देयर इज एनीथिंग इज लेफ्ट। ओके, मैं इन स्लाइड्स को आपके लिए रीअरेंज कर दूंगा थोड़ा। ओके, जिससे आपको थोड़ी आसानी होगी इसको पढ़ने में। ओके, कुछ रह तो नहीं गया। लेट मी सी द थिंग्स वंस अगेन, द थिंग्स। ओके ओके, everything everything is covered for this lecture. Okay, 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 everything is covered. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कीजिए, और क्वेश्चंस भी हैं आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी डाउट हो आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। ओके, मैं रिप्लाई दूंगा। ओके, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय। अगली क्लास में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सबके ऊपर, और थोड़ा थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देखेंगे। और अगली क्लास में अपन कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे, जो अच्छा खासा टॉपिक है। ओके, और एडवांस में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हो सके तो पुरानी चीज़ को अच्छे से रिवाइज करके आएँ। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के